non-uniform motion. Clear guys? Because in last class we have already started like what is the meaning of uniform motion. Clear guys? So I hope uniform motion is clear to everyone. भार्गव बेटा यूनिफॉर्म मोशन में कोई प्रॉब्लम? यस अमन, हाँ okay, actually we have solved few questions based upon non-uniform motion. Clear? But see here in non-uniform motion हमने exactly अब नहीं किया है that we are supposed to do. Okay, okay, so uniform motion is clear. Non-uniform motion देखो इसमें काफी सारी चीजें हैं. जैसे once we are talking about non-uniform motion तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें हमारा इंटीग्रेशन भी आएगा, उसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा. So many things would be there. So uniform motion में still if anyone has any problem just let me know. Okay, so I hope it's clear to everybody. So that we are ready to start non-uniform motion. Okay, RN no problem at all because we have not covered anything at all. We are just starting the class. Okay, so I hope you guys attempted the DBP sheet, right? Okay, that's good, Srishti. Day by day. Okay, I hope everybody got DBP sheet 2. Okay, okay, that's good, that's nice. So that we can mark questions based upon sheet number 2 also. That would be an advantage. Okay, चलो तो ठीक है, देख लेते हैं. Write down next heading non-uniform motion. Okay, next which we will see that would be non-uniform motion. Okay. चलो भाई इसको समझते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो आप यहाँ पे देखो बेसिकली till now everything was clear. Like if the motion is uniform, what was the criteria? Velocity must be constant and the body covers equal distance in equal time interval. What was the value of acceleration? The value of acceleration was equals to 0. Clear guys? This was all about uniform motion. अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. Now try to understand non-uniform motion का मतलब क्या हुआ? Simply velocity will not be constant, which means velocity will be either increasing or decreasing. Suppose if you are driving a two-wheeler and you simply taking the accelerator, तो तुम्हारे two-wheeler की स्पीड क्या होती है? It increases continuously. या सपोज करें आप बहुत तेज स्पीड पे जा रहे हैं and you suddenly apply the brake. Clear guys? तो उस समय क्या होता है? व्हीकल की स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है? रिड्यूस हो रही होती है. So whenever there is a variation in speed or velocity, such type of motion is known as non-uniform motion, which means the first criteria for non-uniform motion is velocity is not constant. Clear guys? Now see here, if the velocity is not constant, then it's obvious that the body will cover different distance in same time interval. Yes, RN will solve the DBT, but just wait for a second. Let's do a little bit theoretical portion and then we'll come back to the DBTs. Okay? चलो भाई. Okay, RN, I hope that's clear. Okay guys, only 49 students are there. Where are the rest of the students? Sir, we have done non-uniform motion. No, RN, we have not done it. Actually हमने non-uniform motion देखा तो है यार, लेकिन उसको डिटेल में भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं सॉल्व किए हैं. So in this class we will focus on numericals. Okay guys? Okay. ठीक है. Right. So see here, first point, according to non-uniform motion, velocity is not constant. Second point, if the velocity is continuously increasing or decreasing, what does it mean? It simply means that acceleration is present. So what you will say? Acceleration is non-zero. अच्छा. अगर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म होना है, if you want motion to be non-uniform, the value of acceleration should be constant or variable. Okay guys, this question I am asking you, what about acceleration? It should be constant or variable? Yes, absolutely right answer. See here guys, it doesn't matter whether acceleration is constant or variable. Here, it doesn't matter whether acceleration is constant or variable. If acceleration is present, then velocity will change. Okay, so acceleration should be non-zero. It doesn't matter whether it's constant or variable. Okay,
And what is the third point? Third point would be the body will cover different distances in same time interval. Clear guys? अब देखो इसके ऊपर अभी हमने क्या नहीं देखा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन. क्लियर गाइस? इक्वेशन ऑफ मोशन की हमने इक्वेशंस तो देख ली है. Like what are the three equations? First equation b equals to u plus ad, x equals to ud plus half ad square, and v square equals to u square plus 2ax. But till now guys you have not seen any proof. Proof अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है. So in this class we will also try to see the proof, like from where we get all the three equations of motion. Point number one. Okay, but before that, as I told you, if motion is non-uniform, just see. If acceleration equals to constant, just write down, only then you can use equations of motion. If acceleration is constant, only then you can use equations of motion. Okay. You will say equation of motion is what? Okay, just look at the board. क्या कह रहा हूँ मैं? If acceleration is constant, in that case, equations of motion are valid. Like a equals to 2 meter per second square, 3 meter per second square, 4 meter per second square. तो उस केस में हम equations of motion का यूज कर सकते हैं. क्लियर? लेकिन अगर अपना acceleration हमारा constant नहीं है, uniform नहीं है. For example, if acceleration is a function of time, if acceleration is non-uniform, what I will say non-uniform, or what I will say variable. यहाँ पे ध्यान रखना. In this case, equations of motion can't be used. हमेशा ध्यान रखना, if this is the case, in this case, equations of motion can't be used. तो इस particular case में जो तुम्हारी equations of motion है वो valid नहीं रहेंगी. हमेशा ध्यान दें. तो if acceleration is variable, in that case what we are supposed to do? In that case we are supposed to do only two things. ठीक है? किसी भी इक्वेशन को अगर अपने को सॉल्व करना है तो हमें केवल दो इक्वेशन यूज करनी है. द फर्स्ट वन यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दैट इक्वेशन, v इक्वल्स टू dx by dt, एंड द सेकंड इक्वेशन दैट विल बी a इक्वल्स टू dv by dt. जस्ट कॉपी अप टू हियर गाइस. Two equations are valid. First one v equals to dx by dt, and the second one is a equals to dv by dt. Okay, everybody got sheet number 2, right? Okay, that's nice. That's nice. So sheet number 2 तुम लोगों ने attempt किया? Okay, that's good. Srishti, how many questions you solved? Okay, that's nice. Very good. Awesome. Okay. ठीक. Okay, no problem at all. No problem at all. Let me see sheet number 2. Yes, I can see few questions are there. From non-uniform motion. Okay, sister, just tell me, did you solve question number 06? Okay, question number 3, question number 5, and question number 6. Okay, all these questions are not easy questions. They are tough questions. Okay, ठीक है. Okay, Mushfiq, are you trying to say something? Okay, Ashish, you did not get the answer keys of DPPs of scalars and vector. Did you talk to Milind sir? Ashish. Guys, I told you if you have any problem, ठीक है, कोई भी XYZ problem होती है, like you don't have the answer key, you don't have the videos, right? Just talk to Milind sir. Okay, I will remind him to provide you the answer keys of sheet number 2. And always remember, if you have any doubt, just talk to Milind sir. Clear guys? Okay. Yes. Okay, question number 11, the answer would be, okay, let's do it, no problem at all, let's do it. I think it is a non-uniform motion. Okay, everybody just look at sheet number 2, question number 11. All the students just look at sheet number 2 and question number 11. Let's solve this question.
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने कोई यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. राइट नाउ वी विल फोकस ऑन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, acceleration can be constant or it can be variable. Here guys, okay, so just see here, as I can see how many students are there, 54. Okay, see here question number 11. I am also reading the question. Question is like this: the velocity of a body depends upon time according to the equation v equals to 20 plus 0.1 into t square. See here, what is the expression v equals to 20 plus 0.1 into t square. Okay. Now the body is undergoing a part uniform acceleration, b part uniform retardation. Guys, what is retardation? Just tell me. What do you understand by retardation? Very good, very good, very good. Okay, yes, yes, both of you are right. Aman and Srishti. See here guys, retardation का बेसिक मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. और जब एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डिक्रीज. एज आई टोल्ड यू, अगर तुम टू व्हीलर से जा रहे हो और सडनली तुमने ब्रेक अप्लाई किया तो तुम्हारी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. और अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है इन दैट केस व्हाट इज गोइंग ऑन, रिटार्डेशन इज गोइंग ऑन. सो रिटार्डेशन मींस सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्लियर? Yes, Mario, you are absolutely right. We also call this deceleration. Soumya, yes. Ishika, yes. All of you are right. We call it deceleration or negative acceleration or retardation. All these things are said. So, see here, according to the question, he is asking, like, what about the acceleration? Okay, sure. I am telling you, if acceleration is negative, तो हम उसको क्या कहते हैं, negative acceleration. We call it also retardation. Clear guys? Or we can call it deceleration. तीनों सेम चीज है, ठीक है. नेगेटिव एक्सेलरेशन कहो, रिटार्डेशन कहो या deceleration कहो, all these things are same thing. Okay students, I hope it's clear. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक शॉर्टकट तुम लोगों को बताता हूँ, हमेशा याद रखना. अगर तुम्हारे एक्सप्रेशन में t के टर्म प्रेजेंट है, like see here, in velocity the term of t is present. तो t present है means velocity variable है. Clear guys? Okay. So whenever you find t, always go for two equations, either v equals to dx by dt or a equals to dv by dt. शॉर्टकट समझ में आ रहा है? ठीक है. अगर x equals to something in t आपको दिया गया है, just like the question we solved in the earlier classes, या v equals to t के टर्म्स में तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया गया है, तो guys what we are supposed to do, first we are supposed to go for what, either v equals to dx by dt or a equals to dv by dt. Clear? अब देखो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है and he is asking about acceleration. Okay, so first what is the formula for acceleration? The formula for acceleration is dv by dt. Clear everyone? मतलब what does it mean? If we differentiate the velocity we will have acceleration. So let me substitute. Here it will be, I will write down d by dt in bracket 20 plus 0.1 into t square. Okay. अब यहाँ पे देखो differentiation का रूल याद करो. What is 20? 20 is a constant, so its differentiation will result into 0. Clear guys? Okay. Plus 0.1 is a constant. अच्छा अब बात बताओ d by dt of t square. What will be our formula? See here guys, d by dt of t to the power n. It will be nt to the power n minus 1. So according to this formula, t square differentiation that will be equals to 2t. Clear? So what is your answer for acceleration? That is 0.2. Now see this expression. अब इस expression को ध्यान से देखना. a equals to 0.2t. This acceleration is constant or variable? Okay, variable. All of them are saying variable. So still, are you telling me it's constant? If time is given, then no, it's not like that. See here guys, okay? You should not misunderstand. A equals to 0.2t.
देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी xyz फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच मींस अगर आप टाइम चेंज कर रहे हो तो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है. नाउ सी हियर इन दिस केस इफ आई सब्स्टिट्यूट t equals to 0, what is the value of acceleration? 0. If I substitute t equals to 1 second, in place of t substitute 1 second, what will be the value of acceleration? That will be 0.2. If you substitute t equals to 2 second, what will be the value of acceleration? Right? Okay. So see here guys, what is going on? As soon as you are changing the value of time जैसे जैसे हम change कर रहे हैं, acceleration की value change हो रही है, which means in this case acceleration is not a constant. Basically, it's a variable or non-uniform. Uniform means constant. Clear guys? So what I will call this? In this case, acceleration is non-uniform. Yes guys, non-uniform or variable. Okay, very good. So I hope everybody is able to understand this. Ashish, Soumya, Shivam, Utkarsh, Mayuri, Rituraj. Okay, that's good. Yes, right answer. Very good. Absolutely right. Okay guys. ठीक है, चलो. तो now see here, अब देखो दो ही केसेस पॉसिबल होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. Either you have to go for integration or you have to go for differentiation. अब किस केस में अपने को इंटीग्रेशन करना है और किस केस में अपने को डिफरेंशिएशन करना है, दैट वी विल सी. देखो आज की क्लास थोड़ी सी टफ होगी यार, तुमको ध्यान से देखना, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पे मूवी मत देखते रहना. आज क्लास को फोकस कर लो, आज की क्लास थोड़ी सी टफ है. क्लियर है ना एवरीवन? भार्गव बेटा कहाँ हो? यस क्लियर. ओके राइट. तो ओके ठीक है. अब यार यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ अलग से नहीं आता, जो थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है वो वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं. क्लियर? जस्ट लाइक इन योर डीबीपी नंबर 2. ओके Siddhi, if I can remember, not Siddhi, I think Shosti. If I can remember in that particular question which you were not able to solve, tell me the question number. Where is my mobile? Okay, I think 3, 5 and 6. Okay. Just like question number 6, this question appeared into JEE as well as NEET. देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा आईटी में आ चुका है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो फ्रॉम जेडब्ल्यू. आई थिंक इट अपीयर्ड इनटू जेई मेंस. सो ये जितने भी क्वेश्चन है, ऑल दीस क्वेश्चंस आर फ्रॉम जेई मेंस. रिमेंबर गाइस. और जो लास्ट वन है वो आई थिंक आपका नीट में, स्पेशली एम्स में उन्होंने उसको एक बार पूछा था. Okay, so this section is very popular according to competitive exam. Okay, yes Bhargav, absolutely everything is interesting, right? Okay, see here. तो यहाँ पे देखो कैसे करना है अपने को. मैंने बताया दो ही चीजें करनी होंगी, either you will go for differentiation or you will go for integration. अब रिमेंबर कैसे रखना है कि किस केस में हमें डिफरेंशिएशन करना है और किस केस में हमें इंटीग्रेशन करना है. सो इन दिस केस एक सीक्वेंस याद रखना है आप लोग. सबसे पहले आएगा डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन. सपोज करो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और वेलोसिटी पूछा गया है, या वेलोसिटी दी गई है और एक्सेलरेशन पूछा गया है. इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम x to v and v to a, देन यू आर गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन. अगर ये सीक्वेंस है तो तुम्हें हमेशा क्या करना है? डिफरेंशिएशन. बट अगर इसका उल्टा दिया गया है, रिवर्स है, सपोज करो तुम्हें एक्सेलरेशन दिया गया है एंड दे आर आस्किंग अबाउट वेलोसिटी. इन दैट केस व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? इन दैट केस यू हैव टू डू इंटीग्रेशन. क्लियर गाइस? ओके. अगर फ्रॉम x to v to a, अगर इस सीक्वेंस में हम आगे जा रहे हैं, देन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? वी आर सपोज्ड टू डू डिफरेंशिएशन. लेकिन अगर इसका उल्टा सीक्वेंस है तो उस केस में हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन. ओके गाइस, just like let me give you a particular problem, just solve it, okay, so that you can realize. suppose करो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है t cube minus 3t plus 10. question is like this, the displacement of a particle is given as t cube minus 3t plus 10. clear guys? okay, I will see how many of you are able to solve this.
calculate its acceleration. What we are supposed to do? We are supposed to calculate the value of acceleration. Calculate its acceleration at t equals to 2 seconds. Okay, let me repeat the question. Displacement of a particle is given as t cube minus 3t plus 10. Calculate its acceleration at t equals to 2 seconds. Okay guys, first everybody try to solve this. Okay, sister, you got it. 10 second, 10 meter per second square. Yes, because it's acceleration. Okay. Okay guys, see here, sister has done it. What about rest of the students? Okay यार जल्दी बता दो तुम लोग क्या कर रहे हो. Velocity displacement is given. From displacement we are supposed to find out acceleration. Okay, Aryan is saying something. Okay, it's important that everybody is able to solve the question. ठीक है? कोई जल्दबाजी में जाने की जरूरत नहीं है. Just try to find out the answer and see if you are having the okay. Yes, Aryan got the answer as 10 meter per second square. That's good. What about the rest of the students? Okay guys, I can see 61 students are there. Okay, take your time. Bhargav got 10 meter per second square. Okay, right. Right, Bhargav, I think that side. Bhavesh is also having 10. So I can see अभी तक जितने स्टूडेंट ने आंसर दिया है, majority of them are telling me that 10 meter per second square is the right answer. Okay guys. Okay, solve it, do it. Okay, so Aryan, Bhargav, Bhavesh, Shivam, Ashish and Rudraj. Okay. What about Siddhi? Siddhi, where are you? Okay, Ashish 10 meter per second square. Guys, just do it and let. Okay, Anisha also got the answer 10 meter per second square. That's good. Anisha, Ashika, Ranjit, Nikita. Okay. So see here, the good thing is all of you are familiar with differentiation. Maximum students are able to. Okay, Siddhi 10 meter per second square. That's good. That's good. बस यही देख रहा हूँ मैं कितने लोग का आंसर आता है. ऐसा तो नहीं करते तुम लोग लॉगिन करके फिर से सो जाते हो. It's not like that ना. चैतन्य, yes, 10 आया. Okay, that's good. नहीं 12 आ रहा है अब. 12. Yes. Okay, guys. See here, I can see. Sushti Utkarsh, they are telling me like answer should be 12 meter per second. 12 meter per second square. फटाफट आंसर चेंज कर देते हैं तुम लोग. तो गाइस शुड बी पॉलिटिशियन है ना. फट से पलट जाते हो तुम लोग विदिन सेकंड्स. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सलाम बोल. यस, सृष्टि. ओके. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिशियन ना, वो फट से कलर चेंज कर देते हैं. जस्ट लाइक व्हाट डू यू कॉल इट. कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपना कलर चेंज करता है? व्हाट डू यू कॉल दैट? हाँ, गिरगिट. राइट, गिरगिट. ओके ठीक है. ओके, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके ठीक है. बाय द वे मुझे इंग्लिश में तो नहीं पता था, मुझे हिंदी नेम भी पता था. व्हाट डू यू कॉल गिरगिट इन मराठी? आई थिंक गिरगिट इज अ हिंदी वर्ड यार. क्या? सरडा. ओके, सरडा. ओके ठीक है. ओके सरडा. ओके ठीक है. दैट्स ओके ठीक है. मयूरी सरडा. ओके ठीक है. राइट. So see first thing, मतलब गिरगिट के लिए we have 3 words. Like in Hindi you call it गिरगिट, मराठी सरडा और इंग्लिश में chameleon. Okay, if I am pronouncing it right. Okay, that's good. काटा है किसी ने? Sorry, गिरगिट ने. Okay, anybody who is got bitten by गिरगिट? It's a very small creature, right? तुम लोग को देख के तो पहले वही डर जाता है. अब तुम लोग को देख के कोई भी डर जाए, गिरगिट की बात ही क्या है?
Okay, ठीक है. चलो. So see here, as I can see, maximum students are having the answer. Yes, we are coming back to the next question. But before this, let me solve. यार यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन निकालना है. तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, मींस x is given and we are supposed to calculate a. Means we are moving in the direction of the arrow. So what we will do? We will do the differentiation. तो यार यहाँ पे देखो, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो first we have to calculate velocity. What is the formula of velocity? That's given as dx by dt. See again, what I will write down, d by dt of t cube minus 3t plus 10. क्लियर है? ओके. अब यहाँ पे देखो t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? The differentiation of t क्यूब is 3t square. क्लियर? Then minus 3 t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? That would be 1. 10 is a constant, its differentiation will be 0. So our expression of velocity comes out to be 3t square minus 3. See here guys, we have already calculated velocity. What is the value of velocity? 3t square minus 3. But remember, we were supposed to calculate acceleration. So once again, I will apply the differentiation formula. What I will write down? I will write down dt by dt. So once again, I will write down d by dt. What is the value of velocity? That is 3t square minus 3. फिर से करता हूँ differentiation. देखो t square का differentiation that will be 2t. So 3 into 2t that is equals to 6t. 3 is a constant, differentiation is 0. So what is the value of acceleration? It comes out to be 60. Okay guys, if I ask you whether this acceleration is uniform or non-uniform, what should be your answer? Yes, absolutely right. Absolutely right. Aryan and Chaitanya, non-uniform. So I just right because t is present, so that's why our acceleration is non-uniform. और इसमें किसी भी तरह की equations of motion तुम्हारी valid नहीं होगी. But यहाँ पे देखो acceleration का निकालना था 2 सेकंड पे. So what I will do, इसमें मैं t की जगह 2 सेकंड रख दूंगा. 6 into 2. Acceleration comes out to be 12 meter per second square. Okay guys. Yes. Yes, right. Absolutely, absolutely true statement. Aman, you are right. What is the acceleration? Acceleration is the second derivative of displacement. Right. Correct statement. How Harshad? How 60 can? Okay. See here, Harshad, what is going on? ये तो differentiation है. देखो, ये मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को d by dt of 3d square. 3 times it will be d by dt of t square. तब ऐड करते हैं जब हमें लिमिट्स या इनिशियल वैल्यू नहीं पता होती. सपोज करो अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन सच दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो ये जो डेटा हो गया ये लिमिट्स का हो गया. क्लियर मुशफिक? अगर तुम्हें इनिशियल वैल्यूज नहीं दी गई है, इन दैट केस वी आर सपोज्ड टू ऐड सी. लेकिन अगर लिमिट्स तुम्हें दी गई है तो उस समय हम सी ऐड नहीं करते. मुशफिक, जस्ट टेल मी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. क्यों? हाँ, नहीं लिमिट है ना अपने पास. यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी ना उसने. तो यहाँ पे यू कैन आल्सो सब्स्टिट्यूट. देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 कर देना, यहाँ पे 2 सेकंड कर देना, देन यू विल हैव द सेम आंसर. राइट राइट. लेकिन यहाँ पे देखो बेसिक चीज क्या है कि यू हैव टू ऑप्शन. क्लियर? मैं भी इस सेक्शन पे इसलिए नहीं आप लोग को बता रहा था बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. क्लियर? बट बिकॉज यू आस्क्ड टू सी हियर, दो ऑप्शन है आपके पास. या तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करूं और आई कैन अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड ओवर हियर. क्लियर गाइस? So it's a different set of different method of doing the integration. Okay, Chetan, I think I was talking to Chaitanya. Okay, RNC here we are supposed to calculate displacement as well as velocity, and we are doing that. Yes, Aman, you are absolutely right. Limit, we can apply limit from 0 to 2. Anisha, yes. Okay, Anisha, I am just waiting for you. What are you trying to say?
Okay, that's good. So I hope Anisha you are able to understand. T की वैल्यू 2 सेकंड इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना और वेलोसिटी जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है t cube by t